namaste to all of you. I warmly invite all of you to this session. I will speak both in English and Hindi, and the topic of the day is the handling GST notices. So what I will I will show you one of my book, that is GST Notices book. Now this is the GST Notices book, and the list, let me show you. मुझे एक बात बताइए, आप लोग जो नोटिसेस जो आते हैं, मैं आपको एक नोटिस दिखलाता हूँ, वहां से मैं शुरू करता हूँ. इस किताब में जो हमारे पास जो नोटिसेस आए, उस एक्चुअल नोटिसेस को हमने यहाँ पर लिख दिया. द नोटिसेस विच वी एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वी हैव रिप्रोड्यूस्ड दैट एग्जैक्ट नोटिसेस हियर. सो दिस इज द नोटिस. Government of India, Office of the Superintendent, place, reference number, DIN is there, date is there, matter urgent to Messrs. Place and GSTN number, verification of payment made by you through various DRC 03. Dear sirs, please refer to the above mentioned subject. In this regard, you are requested to submit the details / supporting documents for which the payments has been made by you under the following DRC 03 challans within a week. Further, you are requested to deposit the interest accrued, if any, on the above said amounts under the provisions of section 50 under intimation to this office at the earliest. Yours sincerely, it is signed, and the name of the officer is missing. Therefore, this is the question mark. Superintendent designation is there, and CGST, it means that it is a center jurisdiction. Now, I want to ask each one of you, how will you reply to this notice? I am just making it like this so that you are able to see the whole notice. Anyone? Yes, Srinivas Rao ji. Not in a proper format, sir. कमलेश जी, बाकियों को बोलने दीजिए. Sir, I think the answer is simple. We need to refer to these CRN dates and the payments what we have done, and a set of documents as to what payment has been done needs to be attached and simply replied to this. Okay. Anyone else? Sir, इसमें कहीं section mention नहीं किया हुआ है. Okay, do you find any mistakes in this notice? One answer which I came from Sanjay Agrawal is that under which section this notice is being issued, that is not given. You have to just find, look, there are 3 ways to reply the notice. One is technical ground, second is law ground, and third is merit. So I don't want to hear the merit kind of thing कि सर ये सारा डॉक्यूमेंट में ये सारा कुछ लेके जाना होगा. नहीं, सबसे पहले सेकंड में मेरिट में ये देखा जा सकता है कि ये जो एक मिनट संजय जी, प्लीज संजय जी, नोटिस का रिप्लाई करना कैसे चाहिए? कि आपको नोटिस का रिप्लाई करना कैसे चाहिए, आपको ये देखना होगा कि इस नोटिस में, जैसे अफसर क्या करता है कि हमारे में गलतियां निकालता रहता है. हमारा भी काम यह है कि हम अफसर के नोटिस में गलतियां निकालें. Notice, if the notice is valid, then only you will reply. If the notice is not valid, you should not reply. Now here, if you see the whole notice, DIN is there, but mentioning of DIN does not make the notice a valid notice until unless under which section the officer has got the power to issue this notice. Can you identify under which section this notice has been issued? Can anyone identify under which section this notice has been issued? Has he mentioned any section? No, sir. No, sir. If section is not mentioned, then how will you know whether the superintendent had the power to issue the notice? Therefore, section is mentioned. Section is compulsory. In every section, they've like, who can arrest? Who can arrest? Which officer has the proper power? Officer? Yes. Proper officer, sir. No. Who is that proper officer? Designation. Who is that proper officer? Assistant Commissioner, sir. Commissioner? Assistant Commissioner or No, Assistant Commissioner. Not Assistant Commissioner. Only Commissioner has the power to arrest. Under which section it has been written that Commissioner has the power to arrest? Under which section it has been written that Commissioner... 65. Section 69. 69. Therefore,
Now, if the notice is issued or arrest warrant is issued under section 69, he will write section 69, then only you will be able to reply. Now, he has not written this superintendent has issued notice under which section. Has he issued under section 61? So SMT 10, he should have mentioned SMT 10. So he has not mentioned SMT 10 further. The name of the officer is compulsory or not? Tell me. Compulsory. Compulsory, sir. Compulsory. If you see every form of the GST, every form, whether it is DRC 01, ADT 01, SMT 10, they have to write your name, designation, jurisdiction with signature. If these things are missing, it is an invalid notice. So this we say that we reply on technical ground. You have seen many high court cases where the show cause notice are being quashed. Why? Because the format has not been followed. The explanatory statements have not been given. These are the technical grounds on which notices are being quashed. So in this here, before you go with your reply, just find out what are the mistakes the officer has made while issuing this notice. Sir, Correct? Sir, sometimes officer made only initials rather than full signature. No. Then In that case, these are called minor mistakes. Minor mistakes can be ignored. Initials, suppose you are making initial, obviously it is treated as your signature. No issue. D. Achha, tell me one thing. Do you have the right to question the notices? Yes. No, Yes no. or no? Look, the officer wants Yes. every part of GST We law, have the right to challenge. smallest, minute to minute detail, officer wants us to comply, correct? Similarly, whether we have got the right that we want that officer should also comply with each and every law provisions, shouldn't we force that officer, yes or no? Shouldn't we write in this reply, while replying, that section has not been mentioned, the proper format has not been made, correct or not? So which section gives the right to question the notice? कौन सा क्वेश्चन आपको राइट देता है कि नोटिस को क्वेश्चन करें? सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन आपको राइट देता है कि नोटिस को क्वेश्चन करें? 160. 160? Yes. 160. Okay. So let us read 160. So from this here, we'll find out under which page this 160 is there. Page 170, sir. कौन सा है? Page 170. Sections 160. Okay. 172 में. Now if you read section 160, subsection 1, where I was saying that minor mistakes can be ignored, but this is very important. This section 160 subsection 2 gives us the right to question the notice. If you don't question the notice now, if you do not find the mistakes in the notice now and tell to the officer right now in the initial stage, and if you question the notice at the higher stage, suppose at the High Court level, the High Court will not listen. Now read this. The service of any notice, order or communication shall not be called in question. You cannot call that notice in question. If the notice, order or communication has already been acted upon by the person to whom it is issued. इस नोटिस का अगर आप रिप्लाई दे देते हैं तो फिर then on technical ground you cannot question the notice at the higher level. Where such service has not been called in question at or in the earlier proceeding commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication. समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप इस नोटिस को रिप्लाई अभी इस तरह से नहीं बनाएंगे
ऑफिसर को अभी नहीं बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो बाद में आप अपील में जाने के बाद आप ये नहीं कह सकते सर ये नोटिस ही इनवैलिड था तो इसको क्वैश कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन करना है तो अभी करना है। हेलो, if you want to question the notice, this is at the initial stages it should be questioned, not at the appeal stage. So what we have written, our observations, the name of the officer and the relevant. Yes, please. My name is Deepak Gadgil. I am chartered accountant. Yes, Deepak ji, tell me. This particular section is similarly worded as income tax section 1292BB. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Okay. If you read Kanga Palkiwala commentary in 292BB, it says that this particular section is relevant only up to service. It talks only about service of notice and not anything else. So is there any defect in the service of notice? Then you can take objection. If you are not able to take the objection at that stage, then you cannot take it at next level. But if there are inherent illegalities in the notice, you can raise those illegalities anytime. That is my view. I don't know about the income tax, but I have one judgment with me. I can show you that judgment. You can read it also. The same section 160 has been quoted by the court, and the court said that since you have not raised this issue at the proceeding stage, you cannot raise it here. And sir, it talks only about service of notice. That is not why service. It talks about everything. No, sir. If you see the wording minutely, it talks only about service of notice. Sir, I'm going just now. I'm going to show you that section. Okay, sir. Please. We can read it again if you want. Section not mentioned. No, sorry. Look, this section 83 was not mentioned in the notice. Therefore, attachment of bank account was quashed. And 160, if I'm look, lack of jurisdiction, section 160. This judgment you can read. Okay, sir. What is the citation of that judgment, sir, please? Deepak, just since I do not have much time, you can read this judgment. The petitioner submitted reply to the show cause notice but did not raise any objection as to the jurisdiction on the ground of assignment of the case to the central officer. The proper officer under the act completed the assessment proceeding and passed the assessment order under section 73 of the UP dated this for the tax period. And this was on account of jurisdiction. Jurisdiction issue was not raised. Therefore, the court quoted section 160 subsection 2 and dismissed this petition. Had the petitioner objected to it at the initial stage or during the course of assessment proceedings, the position could have been rectified by the respondent number 4 by informing the central officer to complete the assessment proceedings. Okay, that is fine, sir. That is fine, sir. But I would like to interrupt further in interest of everybody else. The section starts with the service of any notice. So it should be interpreted strictly. Only it pertains to service of notice and nothing else. Beyond that, The service of any notice, order, or communication does not mean that only service. It means everything. I can show you the judgments in income tax where it is similarly worded. सर मैं आपको जजमेंट कोर्ट का दिखला रहा हूँ, उसको आप नहीं मान रहे हैं, फिर आप अपनी बात कर रहे हैं, बताइए मैं क्या? नहीं, ठीक है सर, आप आपका जजमेंट मेरे को साइटेशन भेज दीजिएगा प्लीज। वो मैंने इधर यहाँ पे एक मिनट ये masterlearning.com है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर, यू प्लीज गो अहेड सर। ठीक है। सो हमने रिप्लाई क्या दिया वो बता देते हैं आपको। तो इसका ये रिप्लाई था। अब ऑब्जर्वेशन क्या था? The name of the officer and the relevant provisions under which this notice is issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Will reply this notice on this technical ground. So we advise the client do not take these documents with the officer. First, ask the officer to mention under which section this notice is being issued. Respected sir, we are having this prayer. In view of the above, it is most respectfully prayed that your good self may be pleased to kindly let us know under which section of CGST Act this inquiry via this notice has been issued, so that detailed reply can be framed. In any case, please grant us an opportunity of being heard.
Outcome, the client did not cooperate, and after a few days, he met the officer with all the relevant documents, even the officer was planning to reissue the notice by mentioning the relevant sections. मैं आपको बता दूं, ये जो हमने नोटिसेस, हमें जो एक्चुअली जो नोटिस मिला था, वही हमने अपने किताब में एक्चुअल जो हमने रिप्लाई दिया था, वो हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, प्लस जो एक्चुअल आउटकम था, वही हमने लिखा है. अब आई विल शो यू अनदर नोटिस, दिस वन. Reference DIN 1st March, verification of availment of input tax credit. On examination of GST payment particulars as reflected in 3B of your firm having GST and for the period 19/20/2021, it has been observed that you have set off more than 90% of your total GST liability through ITC. Therefore, to verify the correctness and veracity of your availment of ITC, you are requested to submit the following documents and information duly signed by authorized person. Purchase register, all purchase, you are required to submit the above documents or information signed, name missing, superintendent, CGST. Now, tell me. सर 100% हम ITC अवेल कर सकते हैं, लॉ में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, बाकी और कौन बोलना चाहता है? गलतियां निकालिए बस नोटिस में, मेरिट नहीं देखना, मेरिट आप सबको आता है. तो इसमें भी सेक्शन का मेंशन नहीं किया गया है. इसमें भी सेक्शन का मेंशन नहीं किया गया. और बताइए. नेम ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इज मिसिंग सर. नेम ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर इज मिसिंग. ओके. और DIN नंबर. यस, DIN नंबर. DIN तो है, DIN तो नंबर है. सारे लोग पार्टिसिपेट करें तो अच्छा लगेगा आपको, आप लोग सीखेंगे कुछ. मैं तो बोलता रहूंगा, फिर आप भूल जाएंगे. आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको याद रहेगा. यस. There is no annexures in the circular, sir. Any circular, sir. There is no Annexures A. They are not mentioning in any circular, sir. सर्कुलर. सर्कुलर Yes, तो sir, नहीं रहता. circular. सर्कुलर की क्या जरूरत है? नहीं रहता. Department have own annexure, sir. There is no annexure, sir. Annexure A, sir, in the notice. No, Can why- you show the Why do annexures? you want annexures in the notices? No, he is asking annexure, sir. No. He is saying that That point. they have attached one format. They Yeah. want reconciliation. Yes, sir. I have not given annexure here. It is not. Yes, sir. Okay. Anything? Okay. Okay. Anything else? ठीक है सर. हर जगह परफॉर्मा है जीएसटी के अंदर, कोई एनेक्सा, कोई डिजाइन अपनी तरफ से नहीं कर सकता. नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं है संजय जी, उसको भूल जाते हैं. लेट अस फॉरगेट दैट. सेकंड वन, ये वेरिफिकेशन के लिए सर वो एसएमटी 10 में उसको एसएमटी 10 में सेक्शन 61 में उसको नोटिस इशू करना चाहिए. ठीक है, तो इसमें तो कोई एसएमटी 10 या सेक्शन लिखा ही नहीं है. You have not written any section or SMT 10. Now, one thing, tell me, is there any violation of law by if I am utilizing 90% of ITC to pay the tax? नहीं, नहीं एक्ट में कहीं फाइन नहीं कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. No restriction. There is no restriction. I can utilize it. Even Rule 86B says that I can utilize 99%. Yes. If I want to utilize more than 99%, then I have to follow certain conditions. If I fall in exception, again that Rule 86B is not applicable to us. So this notice suffers from many defects, but one of the major defect is the section has not been mentioned. Now, so the name of the officer and the relevant provisions under which this notice is issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Further, documents of the records are being demanded, but under which section the documents are being asked to produce is not mentioned. Also, which section of GST law is being violated if payment of output tax is made by utilizing more than 90% of ITC. So these are the observations, and it is up to you that what points you mention in the notice. Now let us see what. Sir, here is one question. In this notice, suppose my client has received, and we have asked for the adjournment in submission of the data. So can we challenge it now? We have just asked for the adjournment, nothing else, sir.
no reply has been submitted. Which notice you have received? किस सेक्शन में नोटिस रिसीव किया था आपने? ये जो सर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट अवेलमेंट का जो सेम नोटिस मेरे क्लाइंट में आया है, where they have asked for higher. हाँ जी सर, जी सर। जी सुनिए मेरी बात, मैं पूछ रहा हूँ किस सेक्शन में नोटिस आया था, ये तो बता दीजिए। सर सेक्शन नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा एडजॉर्नमेंट दे दे, ठीक है। हाँ, खाली हमने एडजॉर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है 2 बार। यस सर, 2 बार किया। अब अगली बार अब एडजॉर्नमेंट का टाइम आए तो उसको लिख दीजिए। ये इस किताब में जो हमने कुछ रिप्लाई के फॉर्मेट बनाए हैं उसको आप यूज करके लिख सकते हैं। जी सर। Until unless section is mentioned, until unless you are able to identify the proper officer, right, you are unable to give the detailed reply. Okay sir, okay sir. Correct? अभी और 2-4 नोटिस ऐसे आएंगे, आप पूरी तरह से समझिए, फिर बात करते हैं, है ना? ओके सर, ओके सर, थैंक यू। इसका जवाब हमने क्या दिया देखिए। देखिए जवाब देते वक्त आप हमेशा याद रखिएगा, यू आर नॉट हियर टू एडुकेट द ऑफिसर। ऑफिसर को आप एडुकेट करने नहीं बैठे हैं कि सर वो वाला सेक्शन में नोटिस इश्यू कर दो, यू इश्यू नोटिस इन दैट सेक्शन और दैट सेक्शन, सर प्लीज टेक ऑल द एविडेंसेस फ्रॉम मी एंड केस को खत्म कीजिए। वो एटीट्यूड में करेंगे तो फिर क्लाइंट का आप भला नहीं कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखलाता हूं हमने क्या किया। Our submission that all input tax credit has been availed as per section 16 of CGST Act by complying all due procedures, that we have not claimed excess ITC credited in 3B vis-a-vis 2A for the period this, which can be easily verified by you from the GST portal, that there is no provision in GST law which prohibit us to utilize more than 90% of ITC for payment of output tax. Prayer, kindly let us know in case your good office requires any further details, we will be providing the same. तो हम लोग cooperate कर रहे हैं। Kindly also let us know under which section inquiry has been initiated so that a proper reply can be framed. Inquiry की spelling हमने क्या लिखी है? E से start है। अगर I से start होता तो I equal to investigation वो section 67 होता। तो हमने जानबूझ के we have deliberately used the word inquiry with the spelling E, not I. It is humbly prayed that in the interest of justice, not in the interest of revenue, hearing opportunity be given before passing off any adverse order. Outcome, officer issued a new notice mentioning the section. अब इसके बाद हमें एक नया नोटिस आया, देखिए उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। Verification of availment of input tax credit. In this regard, please refer to Rule 56 sub Rule 18, 57 sub Rule 2, and 57 sub Rule 3. Read with Section 35 of CGST Act for inquiries as mentioned in your letter dated this. According to this rule, every registered person shall on demand produce the books of accounts which he is required to maintain under Rule 56. Read with Section 35. Further, it is a general drive for verification of the veracity of input tax credit claim by the taxpayer through 3B returns as per data received from higher formations. या higher formations कौन है पता है आपको? Who is this higher information? You must have received the notice that we have received information from DG Arm. DG Gram. Yes. They are the higher formation. So in cases where the substantial amount of ITC has been utilized to set up the output tax liability, therefore you are once again this is. Now whether this is a valid notice, yes or no? I asked the section, they have mentioned the rules and sections. Is it valid? Jignesh ji is saying proper officer is again missing, but he has mentioned the rule and section. सर हम बोले? हाँ बोलिए कमलेश जी। इसमें बुक्स वो मांग सकते हैं जो ऑडिट में है, वो उसके लिए बुक्स मांग सकते हैं। ओके ठीक है। और बाकी लोग? सर एम आई ऑडिबल? यस यस अभिषेक जी प्लीज। सर एक्चुअली जो टेक्निकली ऑलरेडी जो टेक्निकली डिफेक्ट है जिसमें, उस नोटिस को दोबारा से ये लोग सही नहीं कर सकते, जो मेरा व्यू है। इनको उसके रेफरेंस में जो नोटिस इश्यू कर रहे हैं ये गलत है।
इनको एक नई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी एक डिफेक्टिव नोटिस है उसका रेफरेंस देके आगे प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी टेक्निकल डिफेक्ट है एक तरह से। हाँ, ये मतलब मैं नया सुन रहा हूँ। अभिषेक बताएं कि ये कैसे आ रहा है आपके नॉलेज में? सर पिछले में हमने चैलेंज करा है कि वो नोटिस इनवैलिड है, मतलब वो नोटिस एज गुड एज कि वो कभी सेंड नहीं किया गया, क्योंकि वो टेक्निकली डिफेक्टिव है। हमने वो चैलेंज किया हुआ है, और ये उनका रेफरेंस में दे रहे हैं कि हमने उस जो नोटिस का रिप्लाई किया है उसके बाद इन्होंने। समझ लिया आपकी बात, लेकिन कहीं कोई कोर्ट का जजमेंट होगा आपके पास जिसके थ्रू ये नॉलेज आपके पास आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? सर कोई टेक्स्ट पढ़ा था एग्जैक्टली, कोर्ट मतलब वो केस याद नहीं है, कहीं बुक में ही रीड कर रहा था। अच्छा, तो एक बार ढूंढ के बताइएगा, क्योंकि मुझे ये गड़बड़ लग रही है। एड ऑन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, रेफरेंस तो होता ही होता है। मैंने तो मतलब आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी नोटिस वेयर इट इज सेड दैट द न्यू, हाँ, बट द फाइनेंशियल ईयर चेंजेस, न्यू नोटिस हैज टू बी इशूड, बट दिस इज नॉट द केस हियर। बट सर जो टेक्निकली अब हो सकता है, सर आप सही कह रहे हैं, मेरा मैं जो कह रहा हूँ that is correct, until unless financial year changes, otherwise no need to issue a different kind of notice or a new notice. Anyone else who wants to contribute? Thank you Abhishek, it was nice. मैं भी इसको लेकिन एक बार पढ़ूंगा जरूर जो आप कह रहे हैं। ठीक है सर, मेरा ये सोचना है कि सर इसमें जो चीज डिमांड्स को मांग रहे हैं, जो मैं मेंटेन करता है, जो डीलर मेंटेन करता है, तो आईटीसी के वेरिफिकेशन में जो भी डाटा वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अवेलेबल है उनके पास रिकॉर्ड में, फिर वो हमसे क्यों मांगते हैं? ठीक बात है। ओके, एनीवन एल्स प्लीज? हेलो। हाँ हाँ जी सर, इसमें असेसमेंट जो होती है वो सेक्शन 62 ऑनवर्ड्स है, 61 62 ऑनवर्ड रहती है, तो असेसमेंट का सेक्शन मेंशन करना जरूरी है, जैसे सेल्फ लाइक स्क्रूटनी असेसमेंट है इस तरह के जो आगे। ठीक है। अब एक बात बताइए। Sir, I think we should not reply for this notice itself, because it's not mentioning any like proper officer, like we should be referring this reply to, and the section is not mentioned, so nothing is there, so it is as good as invalid notice. Okay, Mala, you are saying that we should not reply to this notice? Yes sir, we should not. I think that should be better response. If any response is given, that is treated as a reply to them, so it will be valid notice then. Acha. Actually, anyone else who agrees with Balraj that we should not reply because it is already a defective notice? Why should we reply? In my view, sir, yes. the section 35 saying books of accounts, the officer have issued only 73 or 74 only, sir. The officer have issued 73, 74 or 74. No, they have not issued in this case any 73, 74. Yes sir, yes sir, yes sir. They have not issued. Now, can they ask for the record on the basis of Rule 56 sub rule? No. In my view, he cannot demand. Basically, he first have to determine under which section he is going to proceed. Yes. Now, why this Rule 56 sub Rule 18 is written according to this? According to Rule 57. Rule 56 sub Rule 18 is written because when he is going to start like any kind of assessment, then he has to demand his books of account. Okay. Just a minute. And then 98 Rule 56 sub Rule 18. Let me find out from here under which page is this Rule 56. Page 21. Rule 56 sub Rule 18. Every registered person shall on demand produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force. This is the exact law. Now, why this is there in the provision? Every person shall on demand, where he will produce on demand? At his office or at my place of business when some officer comes for audit under section 65? Or there is an investigation under section 67 and the team of the officers come to my place of business and ask for the books of account, then on that demand, I will produce the books of accounts. So this rule is helping section 65, that is audit, or section 67.
This is not an independent rule where the officer can demand the books of accounts by quoting this rule 56 sub rule 18. Therefore, the officer That's what I mean. doesn't have the power to demand any books of accounts at his office by utilizing rule 56 sub rule 18. First, he has to issue either section 65 ADT 01 notice or section 67, that is investigation. Officer do not have the power to call for records to his office. PO has power under section 70, that is under summon or under any inquiry or under section 65. Now, what reply should we, इसका reply क्या दे बताइए अब आप, इसका reply देना है, क्या दे? इसमें बस बोल देना सर कि आपने ऑडिट में डिमांड करना, ऐसे क्यों मांगेंगे? अच्छा, अभी हमने कहा कि यू आर नॉट हियर टू एडुकेट द ऑफिसर. व्हाट रिप्लाई शुड वी मेक? सर इसमें रिप्लाई अपन ये दे सकते हैं कि अंडर विच सेक्शन इशू किया गया वो प्रॉपर नहीं है करके. ओके, करेक्ट. क्या लैंग्वेज लिखेंगे? To be in technical terms, we can write that the said notice is invalid because the rule 56 mentioned is not in accordance with the assessment section which demands books of account. It is not an independent section or rule. It is a dependent section, and the main section in which department should ask is not mentioned. Okay, मतलब you are trying to educate the officer under which section you have to. मतलब okay, correct. ठीक है, चलिए, पॉइंट टेकन. और कोई? अच्छा, सबसे पहली बात, हम लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एज ए प्रैक्टिशनर? डू यू नो हाउ टू ड्राफ्ट द रिप्लाईज एंड व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग? फर्स्ट, नेवर एडुकेट द ऑफिसर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, बी वेरी पोलाइट. सेकंड, so by the main issue is the officer never accepts he is incorrect. He always says कि मैं सही हूँ, ये सही है. Correct. अच्छा, एक बात पूछना चाह रहे हैं आप लोग सबसे. I want to ask one question. Who makes the law? Parliament. But what is really happening that the officers are making the law? Officers are being the lawmakers. Sad part is that, and the saddest part is that we are accepting whatever the officer is saying without challenging the notices. सर, मुझे लगता है सिर्फ 10% केसेस में ही हम टेक्निकल ग्राउंड पे चैलेंज करते हैं. 90% में हम लोग वी जस्ट रन टुवर्ड्स द ऑफिसर की प्लीज ये हमारे ग्राउंड्स हैं, हम वी आर ऑनेस्ट, प्लीज फॉरगिव अस, लाइक दैट. Correct, Abhishek ji. So we are targeting that 10% only. हम लोग भेड़ चाल में नहीं जाना चाह रहे. So we are here to explain, to make you understand how to challenge the notices at the initial stage also, and how to win the cases for your client, how to work in the interest of your client. पूरे law में, if you see, everywhere they have written the officer will act in the interest of the revenue. Correct? If the client comes to you, what is your main goal or dharma? To work in the interest of client. To work in the interest of the client. Obviously, the point is that you will never ask the you will not represent any client which are doing fraud. You will not represent any client which are issuing fake invoices. We are not talking about. We are talking about genuine client. आज बिजनेसमैन जीएसटी से डरता क्यों है, जरा ये बता दीजिए मेरे को. सर, सैड पार्ट ये है कि ज्यादातर प्रैक्टिशनर बोलते हैं कि हाँ, लॉ में तो डिपार्टमेंट की फेवर में इंटरप्रेट करते हैं लॉ. दे ट्राई टू इंटरप्रेट लॉ ओनली इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू, नॉट इन द फेवर ऑफ क्लाइंट. एक मिनट अभिषेक, अभी एक मिनट, एक बात पूछना चाह रहा था, मैं भूल गया फिर से. मैं क्या पूछ रहा था, किसी को याद है अभी? बिजनेसमैन डिपार्टमेंट से. बिजनेसमैन डरता क्यों? हाँ, बिजनेसमैन डिपार्टमेंट से क्या टैक्स देने से डरता है क्या? ये बता दीजिए मेरे को, किससे डरता है? हैरेसमेंट से डरता है सर. यस, हैरेसमेंट डिपार्टमेंट से, हैरेसमेंट से डरता है, गलत नोटिस से डरता है. करेक्ट. नोटिस आने के बाद जो डर लगता है बिजनेसमैन को, एम्प्लॉय नहीं समझेगा या ना प्रैक्टिशनर समझेगा, वो एक्चुअल बिजनेसमैन ही समझेगा.
बोला क्या आ गया, इसको रफा दफा करो किसी तरह से। तो वो हरास, वो टैक्स देने से बिल्कुल नहीं, आप 50% टैक्स लगा दो, बिजनेसमैन हंसते हंसते देगा। लेकिन एक बात बताइए, ये वाला जो नोटिस आया, आपने यू करेक्टेड एनुअल रिटर्न and you paid the taxes through DRC 03, correct? Now the department is issuing the notices and asking, without mentioning any section, why you have paid taxes through DRC 03, come with all the documents. Does it make sense? Please सोचिएगा जरूर, और सोचिएगा किसके बारे में, क्लाइंट के बारे में। You come to the in the shoes of the client, shoes in the businessman. Why he is unhappy when he is registered under GST, not for paying the taxes, but because of the harassment of the officers. Officers are making the law and we are agreeing that, yes, sir, please take this document, please take this document, anything else which you require, please take that also, without questioning the notice. We question this notice. Now what, let us see what reply we made. This was our reply. And look, that we are a tax compliant SSC. Regarding availment of ITC, we would like to submit that all our purchases are reflected in 2A or 2B with all invoices details and vendor details which are available on GSTN portal to your good office. That more than 99.5% of input tax credit relates to only one vendor, which is this. That we had been filing both 1 and 3B in time, and the same can be viewed in GST portal. That we have rightly and genuinely claimed all ITC as per section 16, that we have not availed any excess, not availed any excess ITC in its 3B than what is reflected in 2A versus 2B. Regarding utilization of credit, there is no restriction in GST law that the taxpayer cannot utilize more than 90% of ITC for payment of output tax. That the learned officer requires us to produce our documents or records under rule this. In this regard, it is submitted that section 35 read with this provides for maintenance of accounts and records, including electronic records. Further, rule 56 sub rule 18 provides that accounts and records which are maintained are to be produced on demand. In our humble submission, the said rules are not adopted in the instant case. Further, it is settled principle of law that a power under a taxing statute are to be exercised with proper safeguards and diligently, that in the absence of inherent safeguards and in the absence of express authorization under CGST Act, Rule 56 sub Rule 18 is not attracted. Prayer, give us the opportunity of being heard. तो यहाँ पर हमने we did not try to teach the officer, educate the officer under which section you are required to issue. As of today, this illegal inquiry proceeding was dropped and no further notice was issued. खत्म हो गया केस यहीं पर. I will show you another notice. Sir, एक screen is not visible. Is it correct? Screen is visible or not? सर एक लास्ट नोटिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था. हाँ. सर जिसमें अपन ने लिखा कि अपन ने, आप देख सकते हैं कि सेक्शन 16 का कंप्लायंस किया है, तो एक पॉइंट ये भी तो लिख सकते हैं ना अपन कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट को भी मतलब लिया नहीं गया है. देखिए एक बात बताएं, मैंने एक नोटिस देखा था जिसमें उसने, उस अकाउंटेंट था, उसने पूरा सेक्शन 16, 17, 18, 19 पूरा छाप दिया. अच्छा. जो पूछा गया वही बात करेंगे ना. वो जब बोलेगा ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, आपने वो कहे एलिगेशन लगाए कि देयर इज यू हैव अवेल्ड द क्रेडिट व्हिच वाज ब्लॉक्ड, देन विल रिप्लाई टू दैट. ओके. Otherwise, there is no need to reply each and everything under the sun of GST. Okay, sir. Another notice. Sir, should we mention the sections if we are not going into merits? Like Yes, you have please. mentioned section 16 and all. क्या फिर से कहिए. सर आपने इस नोटिस में रिप्लाई किया था कि हमने सेक्शन 16 को कंप्लाई किया है एंड तो ये एक तरह से हमारा मेरिट पर, मतलब आई थिंक कि इफ वी आर चैलेंजिंग ऑन टेक्निकल बेसिस देन वी शुड नॉट मेंशन एनी मेरिट. ठीक है, डन. यस. तो हम लोग तो देखिए, मैंने एक बात और कही थी, वी शुड बी पोलाइट इन एवरी केसेस. So if you don't want to mention, it is no issue, you cannot mention also. और किसी को कुछ कहना है इस रिप्लाई के बारे में?
सर अगर नोटिस ही टेक्निकली रॉन्ग है तो क्या रिप्लाई फाइल करना कंपलसरी है? हाँ, ये बात जवाब देना मैं भूल गया जवाब देना। अगर टेक्निकली इनवैलिड नोटिस है, शुड यू रिप्लाई और नॉट? If you don't reply, what are the consequences? Let us think about consequences. Answer will be there. Anyone? Demand किस बेसिस पर निकालेगा ना? रिमाइंडर कर सकता है सर 3 टाइम्स। यस, रिमाइंडर तो कर ही सकता है। उसका रिमाइंडर का भी रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर इंटीमेशन में चला आता है ना 1 वे में वो लोग। वो 124 पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। He can issue penalty proceeding under section 122, पेज 132 में आता है। यहां पर आप देखिएगा, if you are not replying to any notice, fails to furnish information or documents called for by an officer in accordance with the provisions of the act or the rules made therein. So you can initiate the penalty proceeding, then you have to challenge that penalty proceeding, saying that this is not a valid notice. But आपको 122 में तो लेके आ ही जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, किसी ने लिखा, सुशील जी ने लिखा, वी नीड टू रिप्लाई सो दैट ऑफिसर कैन नॉट इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग और टेक एनी एडवर्स व्यू। हमने क्या किया था, एक जगह वो इसी वाले में आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ GR नंबर 45, प्लीज रेफर टू द अबव मेंशन्ड मैटर एज योर GST has been selected by risk analysis wing RAW for verification. In this regard, it is requested to submit the following records or documents to this office as early as possible. देखिए इतना कुछ मांग रहा है। 1/3B का कंपाइलेशन समरी, QA in Excel, परचेज एंड सेल लेजर, लेजर की स्पेलिंग हमने जानबूझ के जो उसने लिखा था वही लिख दिया। Purchase and sale invoices along with e-way bills, ITC ledger, proof export of that goods which you have sold at a GST rate of 1%. Please mute कर लीजिए अगर आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इस नोटिस में। Sir, no DIN. DIN is not mentioned. DIN is there. DIN is there. Sir, it is intended to provide the documents as early as possible instead of any time limit. Time limit is not given, sir. Yes, time limit is not given. Under which time, date and time this document has to be given. Correct? Anything else? Again, there are sections and rules are missing. Yes, sections and rules are missing. Under which section rules these notices are being asked for? Correct? Sir, officer name is also missing. Officer name is given. Signature is missing. Sir, DG superintendent is not the proper officer, I think, sir. AC is the proper officer. तो वो तो proper officer तो तभी identify होगा. Until unless section is not mentioned, you cannot identify the proper officer. So if you are saying superintendent or assistant commissioner, that can be identified only when the section is mentioned. Spelling mistake. No, spelling mistake is a minor mistake. Section 160, subsection 1. But we have highlighted the spelling mistake just to highlight this, that the officer while issuing the notices can at least, if they are not able to mention the section, can correct the spelling mistakes. सर इसमें इंक्वायरी इनिशिएट डीजी ग्राम ने करी है तो सर फिर सुप्रीडेंट क्यों दे रहा है नोटिस? सर क्या दिक्कत है उसमें? डीजी ग्राम ने भेजा तो वो सेक्शन 61 में SMT 10 का नोटिस सुप्रीडेंट तो इशू कर ही सकता है। सेकंड वन सर, वो जैसे ये कंपाइलेशन समरी मांग रहे हैं, ये सारा डाटा तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, फिर मांग क्यों रहा है? यस, वैलिड पॉइंट। अच्छा, ये डीजी आर्म ने कुछ इसको भेज दिया, क्या भेजा हमें बताया नहीं। डीजी आर्म हैज सेंट समथिंग टू हिम, हेलो, एंड he is become Hanuman, and he has asked each and everything under the sun of the business.
कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, bring this also, bring this also. What is the nature of inquiry he wants to conduct? Now, this is the case of harassment. Basically, officer is not clear what he has to. DGRM mentioned in section 151. 151 में जो भी होगा उसमें तो सर डिपार्टमेंट का होगा. प्रीतम जी अभी बात करते हैं. Observation. The signature of the officer and the relevant provisions under which this inquiry is being initiated is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. In addition to the above issue, this inquiry also contains many spelling mistakes which we have reproduced as it is. और इसलिए ऐसा कर दिया कि आप लोग को न लगे रीडर को कि ऑथर ने गलती की, ऑथर ने कोई गलती नहीं की है. In addition to the above issue, this inquiry also contains many spelling mistakes which we have reproduced as it is. To simply highlight that the learned officer while issuing the notice can at least check these minor mistakes if not GST provisions. Now, what reply which we have made? Now again, we did not try to educate the officer. In previous one, we asked the direct question, produce the section, but here we are not asking the direct. We are saying many things indirectly to the officer. Let us see what. GST law contains many provisions which has given functional jurisdiction to a proper officer. Functional means there are certain powers given to the proper officer. All such functional jurisdiction can be exercised by a proper officer within the realm of GST law. All such functional jurisdiction are attached with conditions, restrictions, and prescribed forms for issuance of notice or communication. Unless all such conditions are satisfied, any issuance of notice or communication is bad, arbitrary, and consequently shall not have any legal effect, even if it contains DIN. To be a valid notice, that format and content need to be strictly adhered to, otherwise that notice becomes an invalid notice or it simply becomes an informal communication without the backing of law. Any demand of records, oblique documents should be as per law and not as per the wishes of the officer. और कुछ नहीं लिखा. और प्रेयर क्या कर रहे हैं? To drop this arbitrary inquiry communication immediately, we are not saying notice. हम लोग तो इसको सिंपली एक कम्युनिकेशन कह रहे हैं और आर्बिट्रेरी है बिकॉज नो सेक्शन हैज बीन मेंशन. और पूरे इस सबमिशन में हमने डायरेक्ट वी हैव नॉट रिटन डायरेक्टली दैट सेक्शन हैज नॉट बीन मेंशन. In this case, please grant us an opportunity of being. In any case, please grant us an opportunity of being heard. Tell me one thing. Who is the proper officer in GST? कौन है प्रॉपर ऑफिसर? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग एक बार चुपचाप रहिए. और जो पार्टिसिपेंट्स है, स्टूडेंट्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और एडवोकेट्स हैं, लेकिन जो नए हैं मेरे साथ, जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, मेरे से सुन रहे हैं, उनसे मैं जवाब चाह रहा हूँ. What is the power of adjudication? Who are the proper officer in GST? Who has the power of adjudication? Who has the power of adjudication? Na proper officer is defined in GST. उस डेफिनेशन क्लॉज में प्रॉपर ऑफिसर का नाम कौन है? वो कौन है बताइए? We are discussing so much about the proper officer, but who is the proper officer? Sir, CBIC 291 page 2. Just मैं आपको दिखला रहा हूं. Commissioner is the proper officer. Proper officer in relation to any function to be performed under this act means commissioner. बस यहीं तक की बात है. इसका मतलब जितने भी पावर्स हैं जीएसटी में, वो सारे के सारे किसके पास है? कमिश्नर के पास है. कमिश्नर के पास है. सारे पावर कमिश्नर के पास है. तो प्रॉपर ऑफिसर फॉर होल जीएसटी लॉ इज हु? कमिश्नर. कमिश्नर. नाउ कमिश्नर तो एक या दो होता है. What commissioner does? He delegates the power to his junior officer. In certain section it is superintendent. In certain section it is assistant commissioner. In another section there is a deputy commissioner, joint commissioner. So he keeps on delegating the power. Now how he delegates it? By issuing the. How he delegates it? By issuing the instructions or orders. Circulars.
by issuing these circulars. You are not audible, sir. Yes, sorry. So where to find those circulars? Now those circulars are given in my books also. Let me show you. Everything is given. This is the first chapter of administration. Now if you have this book, if you don't have this book, you will need it if you want to go into GST litigation, because it covers everything. So these are the territorial jurisdiction notifications, and these are the functional jurisdiction circulars. Now if I ask you, have you received a notice under section 65 ADT 01 audit notice? How many of you have received ADT 01 notice? Please बताइए, ADT 01 का नोटिस किसने किसने रिसीव किया है? मैंने किया है सर। किया है। सिग्नेचर किसने किया है ADT 01 के नोटिस में? असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर। और बाकी लोगों के केस में? मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट मेल आया था ऑफिसर से, बट कोई सिग्नेचर ही नहीं था उसमें, खाली नाम था, सिग्नेचर ही नहीं था सर। डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन सुपरिटेंडेंट था सर। सुपरिटेंडेंट, ओके ठीक है। और अच्छा, अब सोच के देखिए, ADT 01 का नोटिस, who has the power to sign ADT 01 notice? Audit commissioner, sir. Joint commissioner. Audit commissioner. The range commissioner, sir. Audit commissioner. Range commissioner. Yes, sir. Where to find that? Where it is written? Where it is written? You will find it here in these circulars. And this circular is related to what? This circular is relating to registration and composition levy, and this is other than composition, registration and composition. Correct? Now let us read. Now what we have done in this book, that table section 10 subsection 5, you need not turn on the pages. You just read section 10 subsection 5. यहीं पर ऊपर में हमने हेड नोट के बेसिस पे लिख दिया 10(5) क्या होता है। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पावर्स लिखे हुए हैं, ये फंक्शंस ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं यहाँ पर, ADT 01 का नोटिस किस सेक्शन में है, जरा बताइए आप मेरे को। सेक्शन 65। सेक्शन 65। रूल कौन सा? इसका रूल कौन सा? देखिए, सेक्शन 65 रूल 101। रूल 101, प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो। रूल 101 audit, page 35. Let us go to page 35. This is 101, where it is decided to undertake the audit of a registered person in accordance with the provisions of section 60. The proper officer shall issue notice in ADT 01. अगर आप नॉर्मल बुक पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा होता who is the proper officer. So what we did, proper officer को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सर्कुलर में जाके हमने देखा, वहां पर क्या नाम लिखा हुआ था, डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर। If you see the normal books, they have not written like this. We have, by looking in the circular, we have written at a head note here, proper officer. Who is the proper officer? Deputy or assistant commissioner. And now let us go to that circular again. Rule 101, sub rule. Look. 99% all over India audit notice is being signed by the superintendent. If you see the powers of the superintendent, functions of the superintendent, there is no rule 101. Look, rule यहां से स्टार्ट हो रहा है, rule 101 है ही नहीं यहाँ पर। तो rule 101 कहाँ है वो देखिए, आपको यहाँ मिलेगा। डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, rule 101। 2, issue to conduct audit in ADT 01. After ADT 01, they will issue ADT 02, and this is inform the finding of ADT 02.
So who has the functional power to sign ADT 01 or 02? That is Deputy or Assistant Commissioner. So if you receive the notice of ADT 01 or 02, you can challenge on this ground that this notice is not being signed by the proper officer. The proper officer is Deputy or Assistant Commissioner. But the reply should be made like this: you should not educate the officer. Let the educate himself find what is the mistake. He should himself correct that mistake. You are not supposed to ask the officer or say where are the mistakes. So this is the DGR. This was the notice which I was discussing, DGR notice. Yes. And what reply we made, I will show you. I think I have read this. Now what he did, he issued a now, what was the outcome when we wrote here? The outcome was the taxpayer got a call that at least submit the document which is asked in point F, and subsequently a new notice was issued. इससे पहले he was asking A1 to 6. Now he changed. He wants only this one. So at least while raising this technical ground, the 6th kind of harassment was there. At least now only one has left. Now he is asking only this. And he quoted the section also, that was section 151. In this connection, it is once again requested to submit all required records or document to this office immediately, as mentioned in the said letter under section 151 of the CGST Act 2017. Now tell me, will you, now he has mentioned the section, will you take this all records documents with you, because he has mentioned the section 151? Anyone? But sir, time limit नहीं दिया इसने यहाँ भी immediately. Immediately लिख रहा बहुत है. सर immediately को क्या कितने टाइम पीरियड कंसीडर किया जाए? 1 वीक? Immediately मतलब सुबह आया शाम तक लेके आइए, इसका मतलब ये भी होता है. बताइए सर, अगर ओरिजिनल लेटर ही वैलिड नहीं है तो सब्सिक्वेंट नहीं, उस पर मत जाइए प्लीज उस पर अभी डिस्कशन हो चुका है. ही इज मेंशनिंग 151. यस निशान बोलिए. हम आपको एक नया तरीका सिखा रहे हैं एकदम नोटिस का रिप्लाई करने का. मेरिट नहीं, मेरिट सबको आता है, हर कोई जानता है. शायद आप जब सीए कर रहे होंगे तब भी आपने सीखा होगा लॉयर्स में, लेकिन ये टेक्निकल और जो लॉ का ग्राउंड है वो सीखिए, वो ज्यादा जरूरी है. 151, let us read 151. Does he power under section, does he have the power under section 151 to call the notices? Let us read 151 and tell me 151 का पेज नंबर. कमिश्नर वही मैं कह रहा था, उस सेक्शन में जाके देखना पड़ेगा एक बार कि वो उसमें पावर है या नहीं है. कमिश्नर में it is at least considered 169. ये है, पढ़िए. द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर dealt with in connection with this act within such time, in such form and in such manner as may be specified therein. लेके जाएंगे. सर ये जो this tendency of saying all records can mean anything. There is no specific record being asked for. कहाँ पर? What is the relevant record? कहाँ पर? नोटिस में when he is asking produce all records as per section. नहीं, उससे प्रीवियस नोटिस में तो 6 रिकॉर्ड के नाम लिखे हैं. So he means all the 6? Yes. How many of you have received notice under section 151? Sushil is saying it is not say that which proceeding are going on. Valid point है, एकदम valid point है. Prerna Vijay Singh, check any rules is specified. 151 do not have any rules. Now, if any section is containing rules, the section will use the word prescribed. There is no word prescribed here. So there is no rule attached to 151. Whether the, अच्छा, मैंने
इंडिया में 151 के नोटिसेस बहुत देखे और ऑफिसर राइट लेफ्ट इज इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 151. इफेक्टिव डेट ऑफ सेक्शन इज 1 जनवरी 2022, उसके बाद का ही है. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं. आपको 151, if you analyze it, why 151? 151 cannot be read in isolation. What was before? This has already been changed. Number one, if you see what was substituted for section 151, power to collect statistics. Now they changed this from power to collect statistics to power to call for information, and the officer are wrongly using it this. That statistics था, अब information हो गया. तो इन्होंने information क्यों किया? तब हमने क्या किया? We started reading the GST Council meeting minutes to understand what was the intention behind changing this law. The intention was to collect the statistics more efficiently. Now, what is statistics? If you see statistics, then 150, like annual information statement in income tax, like that. From banks you are asking some information, from electricity department you are asking information, from any PSU you are asking information. So you are collecting the information. If you want to collect the information from a third party, then this section 150, 151, 152 is being used. Any person being a taxable person, a local authority, state government, income tax authority, banking, state electricity board, who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or any periodical return or document containing details of payment of tax and other details of this, consumption of electricity. It means that if they are writing here taxable person, it means that suppose the officer will issue me a notice, and he will not demand information of my account, but of that account from whom I have the transaction. Therefore, 150, 151 is asking information from a third person, not directly from you. If they want to ask information directly from you, then section 61 is there, section 65 is there, 73 is there, 74 is there. Blanket information directly from you cannot be asked under section 151. If you read also 152, no information with respect to any matter given for the purpose of 150 and 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person, shall not be shared to others. But recently they have come out with 151A in this Finance Bill 2023, where they have come out with 151A. If the registered person wants to take loan, or they want to get himself registered under MSME, or for any project report, then they will give the access of GST data to these organizations so that they can approve your sales by seeing your invoices. So these kind of things. Therefore, 151 do not give the power to the officer to call for any record directly from that person to whom you want to adjudicate. One thing more I want to ask. Tell me one thing. If you have claimed any ITC, burden of proof is on whom? Taxpayer. Registered person who has availed ITC. Who has availed ITC? And other than ITC, if they want to prove that there is a suppression of turnover, then on whom burden of proof lies? On Department will prove, no, sir. Department will prove, because it is a quasi-criminal proceedings. But here, tell me what is happening in this notice. He is asking all the evidence from you to prove that you have suppressed the turnover. Is it correct? Tell me, क्या ये सही है? आपसे वो एविडेंस मांग रहा है कि चलो देखें आपका टर्नओवर में इवेजन है या नहीं. GST department is required to collect all the evidence and submit it to you. He is required to prove. Lekin what happens in the zeal of solving the case? You take all the documents to the department, all the evidences to the department, which you are not required to do so. So what we did,
we replied to this section 151. This, our reply, our submission. We are complete GST compliant taxpayer both in letter and in spirit. We have been regularly filing our required return and paying taxes in time and also replying to all notices as per law within time. हम लोग cooperate कर रहे हैं, उसका invalid notice का भी जवाब दे रहे हैं. We have even not ignored unlawful communication by your good office and we have replied to that communication also. Now, with this regard to this communication, where we are asked to produce documents of records immediately as per section 151, section 151 read as under, as per section 151, following conditions need to be satisfied. Commissioner is authorized to direct any person to furnish information relating to any matter this. And Commissioner इसको दो पार्ट में तोड़ दिया. As per 39 GST Council meeting minutes and agenda volume 1, the objective of amendment of section 151 is clearly spelled out. The amendment has been carried out for more efficient collection of statistics. The relevant extract for the efficiency of the collection of statistics, it may be ensured that the information may be sought as per the requirement on a case-to-case basis. 1 minute. The objective of section 151 is to direct any officer or the third person to furnish any information for collection of statistics. This position please mute कर लिया कीजिए अगर आपस में बात कर रहे हैं तो एक्सेल जाएंगे ना कि This position becomes crystal clear when read with section 150 and 152. In the instant case, we are neither officer nor third person who can furnish such information. The said communication also says this inquiry is being conducted under DG ARM. The objective of DG ARM to provide intelligence inputs and do big data analytics for officers. The collection of data intelligence can be made from officers, third party, and not directly from the taxpayer. मैं इसमें और भी लिखना चाह रहा था incrementing evidence. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है. We are not required to give incrementing evidence. फिर इसके बाद जब हमें पता लगा ये मर्चेंट एक्सपोर्टर का केस है, मर्चेंट एक्सपोर्टर में वी आर रिक्वायर्ड टू गिव, देन वी गेव इट. अल्टीमेटली वी गेव इट बट आफ्टर फाइटिंग. फिर इसके बाद और नोटिसेस हैं. तो ऐसे तो वी हैव रिप्रोड्यूस्ड 20 notices. And in all these notices, we are not replying on merit ground. In all the notices we have made, all are made on technical or law ground. ये सारे notices को हम लोग merit ground पे नहीं लिखते हैं. हम लोग ने जितना भी notices का जवाब दिया है, वो सारा का सारा technical और merit ground पे है. तो ये draft है. हम लोग strongly advise करते हैं कि copy paste से फायदा नहीं होगा. इसमें अपने सारे फॉर्म्स ये सब भी लिखे हुए हैं. जैसे एसएमटी 10 का नोटिस आ जाए तो एसएमटी 10 का फॉर्म रूल 99(1) में है. देन यू कैन चेक व्हाट इज रूल 99(1). यू कैन चेक द प्रॉपर ऑफिसर. एवरीथिंग यू विल फाइंड एट वन प्लेस. So here I will conclude it, and what I am proposing is that daily at 5 p.m. at this time only, we'll meet again and again at 5 p.m. and we'll solve your individual queries. In the meanwhile, I want to take up your individual questions if you have any, and I will show you one thing so that everyone is benefited. If anyone is interested in buying this book, then this is our website, taxbykk.com. This go to shop, then there is a GST books, GST Law and GST Notices book. And there is another book, GST Council meeting minutes book, where you can personalize with your own name. So I will talk you. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन GST Law, GST Notices book, ये बुक आपके पास होनी चाहिए. और हमने किताब से रिलेटेड आपको बहुत कुछ दिखलाया. ये किताब आपके पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने ये GST Law की किताब हमारे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने लाइव क्लासेस लेके पढ़ा है इसको. और ये 800 पेजेस का है. इसमें 800 रुपीज का है. पेजेस 442 है और इसमें इतने सारे चैप्टर्स कवर्ड है. और एक जो किताब है हमारी, वो नोटिसेस की है. इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं. तो किसी को चाहिए तो जरूर से आप ले लीजिएगा. अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा
एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपकी, एक मिनट होल्ड कीजिए। एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, जितने लोग मैक्सिमम लोग अगर वीडियो ऑन कर सके तो एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं उन लोग से डायरेक्ट एक बार 1-to-1 बात कर लूँ। हेलो सर। थैंक यू जिग्नेश जी, वेलकम, प्लीज। थैंक यू सर। और सर किसी पर्सन का तो आप फिर बताते जाएगा, ठीक है? जो स्क्रीन में जो पहला आ रहा है उससे मैं बात करता हूँ। श्रीनिवास राव जी, प्लीज अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए मेरे को। ठीक है, सब कल मिलेंगे 5 बजे। श्रीनिवास जी, आपकी यू आर नॉट ऑडिबल। श्रीनिवास जी, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कल 5 बजे मिलेंगे सर। श्रीनिवास जी, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, 5 बजे मिलेंगे सर कल यही टाइम पे। प्रवीण जी प्लीज और अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी सर। हाँ बोलिए। जी सर, मैं दिल्ली में हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। प्रैक्टिस में? और यस, तो आज फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड विश टू कंटिन्यू फर्दर। हाँ, तो हमने क्वेरी है मेरी, क्योंकि व्हाट्सएप में क्वेरी का जवाब देना बहुत मुश्किल है, और टेक्निकल ग्राउंड, लॉ ग्राउंड में लिख लिख के कितना भी बता देता, आप लोगों को नहीं समझ में आता जी। तो वो जूम पे ही पॉसिबल और कहीं पॉसिबल नहीं है जी। तो जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा। सर एक क्लाइंट है, उसका सस्पेंशन किया है ऑफिसर ने अभी। कल भेजिए ना, वो मेल पे भेजिए ना प्लीज। आज एक बार इंट्रोडक्शन सबका ले लेते हैं। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। महेश चंद जी, महेश चंद जी। हेलो महेश चंद जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को, बाकी लोग म्यूट कर लें एक बार। नमस्कार सर, मैं सीए महेश चंद सिंह, सीए महेश, प्रैक्टिसिंग सीए ऑफ गाजियाबाद सर। अच्छा अच्छा, वेलकम सर। जी बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। आज का सेशन का कैसा रहा ये भी बता दीजिए। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। ठीक है। ये सर बुक्स में जैसे आपने जो नोटिस के रिप्लाई दिए हैं, ये किस तरीके, मतलब टोटल कितने? 20 है, 20 है। 20 रिप्लाई है जी। तो इशू कर सकता है 20 है सर। मेरे केस में एक सेक्शन 129 की आज पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद कल मेल पे भेजिए। सीए कमल से प्लीज, सीए कमल। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कर दीजिए। हाँ कमल जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सभी। सर कमल सिंगला चंडीगढ़ से। सर मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। अच्छा। 2 years बैक, एंड जीएसटी में थोड़ा सा काम सीखना चाह रहा था आगे, इसी तरह से नोटिसेज वगैरह का। ट्रेनिंग पीरियड में काफी जीएसटी का वर्क किया है, बट नोटिसेज वगैरह कभी डील नहीं किए सर। ओके, तो इसी तरह से आगे बढ़ना चाह रहा था आप सभी सीनियर्स के साथ। तो आज का सेशन सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और काफी कुछ सीखने को भी मिला। काफी नोट्स भी प्रिपेयर हुए सर मेरे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। गुड गुड, चलिए थैंक यू। बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। हेलो जितेंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ जितेंद्र जी। यस सर। सर मैं जितेंद्र सोनी, अहमदाबाद से, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ से? जीएसटी में प्रैक्टिस, अहमदाबाद गुजरात सर। हमारी बात हुई थी। ओके ओके ओके। जीएसटी में ही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। और यूट्यूब पे मैंने जो आपकी जीएसटी काउंसिल मिनट्स की जो आपके वीडियोस है, हाँ, वो देखे थे, वो मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे वो। और उसके बाद फिर हमारी बात हुई, और फिर वो जो आपके व्हाट्सएप पे ये लिंक आया, आज फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन ये आपका लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। यस, मुझे याद आया, आपसे बात हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आज का लेक्चर भी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपसे मेरी सेक्शन 16 के ऊपर और बाकी प्रोविजंस पर भी बात हुई थी। यस सर, 61 के ऊपर बात हुई थी हमारी। चलिए थैंक यू जितेंद्र जी। बीके त्यागी जी प्लीज। हेलो। नमस्ते। यस सर, आई एम कतिमान सर। एक मिनट में, त्यागी जी बोलिए।
नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, कहिए। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सर। अच्छा। और CS प्रोफेशनल का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा। बाकी मैंने आपसे कोचिंग भी ली है सर क्या बात 2010 कर रहे हैं? में। कब? 2009-10 में लिए एग्जीक्यूटिव में। कहाँ पर थे आप? ये राव क्लासेस थी सर प्रसाद राव नगर में। क्लासेस में थे, ओके ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपका जो टैक्स आपने पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स, वो अभी तक याद है सर, और बुक भी आप ही की रेफर करते हैं अभी तक। गुड। आप प्रोफेशनल के रूप में अब हम लोग जुड़ रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। पहले स्टूडेंट के रूप में थे हम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन? बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच। अमन जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। पहली बार सर। पहली बार? हाँ लेकिन रेगुलर अब। कैसा रहा सेशन? बढ़िया सर, मस्त। आज स्पेशल ले लिए ये वाला, कहीं मेरा पुराना वाला बेटा छीन लिया था। ठीक है। गया अभी आप ही के पीछे, बोले पहले दो भाई सर से बात करें रेगुलर। चलिए ठीक कल है। से फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा परेशान करने के लिए आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल आइए, बोकारो का ही है अमन जी, जहां से मैं आता हूँ। सुरेश बंसल जी। सुरेश बंसल जी, नमस्ते सुरेश जी। अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को सुरेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। सर मैं सुरेश बंसल CA हूँ जी, प्रैक्टिसिंग दिल्ली से बोल रहा हूँ। प्रैक्टिसिंग कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं, ओके ओके। किस जगह दिल्ली पे? सर दिल्ली मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर में है जी, मयूर विहार में। अच्छा, मयूर राय लक्ष्मी नगर में, ओके ओके। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नोएडा से एक हमको नोटिस आया है कि समवन हैज कंप्लेंट अगेंस्ट आवर एसएससी। सुरेश जी, आप अपना ना नोटिस जो आया है वो आप मुझे मेल भेज दीजिए, वी विल डिस्कस इट टुमारो। आज मुझे इंट्रोडक्शन लेने दीजिए सबका। अच्छा सर, मुझे मेल आईडी जरा अपडेट कर दें सर। kk@gmail.com। मैं दोबारा भेज रहा हूँ आप सबको। हाँ सर, वो जरा विजिबल नहीं है, जल्दी निकल गई सर बात से ना। KK टैक्स दोबारा भेज रहा हूँ जी। हेलो, हाँ ये है जी KKAX सर। KKAX टैक्स है सर, KK टैक्स सर। KK टैक्स है सर, दिख नहीं रही पूरी। KK टैक्स है ये, TAX। हाँ हाँ। अच्छा, KKTAX@gmail.com सर भी है सर। अच्छा ठीक है सर, मैं इस पे वो कॉपी आपको मेल कर देता हूँ सर। उसके बाद देन वी विल डिस्कस टुमारो अगेन सर। ऐसे ही सर बहुत अच्छा लगा आज आपका आईडी सर मिलकर सर। हेमंत देसाई जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर बताइए इसके बारे में कुछ। I am from Surat. You are from Surat, okay okay. Yeah, I am highly impressed of your corresponding act versus rules. That is very very essential, and I found that everyone should have that sort of note. Correct, correct. I just keep on practicing only on the appeal stage. I don't file any returns. The most important thing is, when we see the brief of our associate people, the reply is very important. Yes. And the way in which you have conducted, I think that will improve the contribution and part of our professional fraternity. Yes, yes. So thank you. Please keep it continue. All the best. Thank you sir, आशीर्वाद चाहिए आपका बस। सब मेरा हाँ श्रीनिवास जी बोलिए। मेरा नाम श्रीनिवास राय सब। हाँ हैदराबाद से बात करूँ मैं। हैदराबाद। हैदराबाद से, ओके। हाँ, मैं तेलंगाना टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन मेंबर हूँ मैम। अच्छा, तेलंगाना टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन मेंबर हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा से सेक्शन अच्छा हुआ सब, बहुत अच्छा। बहुत पहली बार सुना मैं ये सेक्शन में, पहली बार अच्छा हुआ। बहुत बहुत कुछ शुक्रिया साहब को, धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने नंबर में आए, दैट इज वेरी गुड। मेरा व्हाट्सएप में पहली बार आया था साहब। हाँ पहली बार मैं देखे, मैं 3 दिन पहले आया था मैसेज व्हाट्सएप में। मैं याद करके आज मैं 9 नंबर में आया था। मुझे डर लगता है उस व्हाट्सएप में ज्यादा मैसेज करने लगूं तो लोग कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा नहीं है सब। बहुत अच्छा हुआ सीजन, थैंक यू वेरी मच सर। KTPA प्लीज बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो, हाँ बोलिए। KTPA नाम अपना बताइए। जी श्रीनिवास राव सर। नहीं श्रीनिवास जी ठीक है, थैंक यू। KTPA कुछ कहेंगे? आपने वीडियो ऑन किया हुआ है।
तेलंगाना टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। तेलंगाना, ठीक है सर। तेलंगाना टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। ओके ओके, थैंक यू। Hello, I am Kadiron, sir. Hello. हाँ हाँ, Yes, sir. I have one question, sir. ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, just. इंट्रोडक्शन अच्छा काफी। Yes, sir. Kadiron, sir. पहले इंट्रोडक्शन। Yes, sir. I am a tax practitioner in Tamil Nadu, sir. ओके, I have read your all books, sir. I have in 1 and 2 books, sir. अच्छा, यू हैव ऑलरेडी बॉट इट। Yeah, sir. कैसा लग रहा है? हाउ? Yes, sir. Yeah, very good, sir. Excellent, sir. But I have one suggestion. The font is small, sir. Little bit to increase the font size. Just one size, you have increased the font size, sir, please. Okay, sir. My question is, sir, the officer has issued the under section 62 for non-filers assessment, sir. They are issued the DRC. Can you send that notice to my mail? We will discuss. No, not is a notice, sir. Just one discussion there. बता रहा हूँ आपको, अभी इंट्रोडक्शन ले दीजिए सबका। Okay, sir. Thank you. Anyway, great, sir. Congratulations, sir. Okay. Vivo 2146, नमस्ते सर। आपने 2146 लिखा हुआ Vivo, आप अनम्यूट कीजिएगा तब बात हो पाएगी। और कोई वीडियो ऑन करके अपने आप को इंट्रोडक्शन देना चाहे? हेलो सर। हाँ, बुधा बनर्जी साहब बोलिए। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। सो टुडे सेशन वाज फैब्यूलस। मतलब बहुत दिन से ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे, आज मिल गया। तो आपका बुक भी देखा मैंने वो वेबसाइट में। हाँ, वो तो आप डिस्कस ही किया। और मेरा एक शोकॉज नोटिस के बारे में कुछ पूछना था, तो मैं आपको मेल करेंगे। मेल कीजिए, कल डिस्कस करेंगे। ओके सर, आई विल सेंड यू। शाम को 5 बजे दोबारा आऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके के सर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, खाली हाय बोला। जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Jignesh Gosalia. I am a practicing chartered accountant since 18 years now. Okay. And sir, I am from Mumbai, but I am practicing pan India. So Delhi में कुछ issues है, तो definitely we would be asking for some of the support from you, sir. But I am not based in Delhi right now. I have shifted to Jharkhand, Bokaro city. Oh, okay sir. But we do pan India practice. Oh, great sir. और knowledge के लिए तो definitely आपके बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे की नॉलेज इंक्रीज करते रहेंगे। जी सर। कैसा रहा सेशन आज का? बहुत बढ़िया था। कुछ बहुत इंसाइट मिले हैं सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और कोई कितने लोग हैं? राहुल, अनिमेश, संतोष पाटिल जी, स्वामीनाथ जी, राजीव दास, सुंदरराजन जी, प्रीतम कुमार दास, हर्षल से प्लीज बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम हर्षल शेठ है। मैं थाना से हूँ, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का। मैं खुद एमकॉम लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, ओके। का पहला लेक्चर सुना आज, पर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपका वो मैं परचेस करना चाहूंगा। बुक में है ना, एक हम लोग करेंगे उसमें ना, क्योंकि दोनों बुक जो खरीदते हैं उसके लिए 1400 प्राइस हो जाता है। वो प्रॉब्लम आ गई, मैं उसको ठीक करूंगा, देन वी कैन परचेज। आई विल सेंड यू द लिंक इन द व्हाट्सएप। सुंदरराजन जी, मॉर्निंग सेशन हम रेगुलर आपका वेट कर रहे हैं। यस। और अभी आज का क्लास भी बहुत अच्छा था। हाँ, थैंक यू। कल की थैंक यू। सुंदरराजन जी इज अवर लाइफ टाइम प्रीमियम गोल्ड मेंबर। तो लाइफ टाइम प्रीमियम गोल्ड मेंबर का भी फायदा आप वेबसाइट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सो थैंक यू सुंदरराजन जी फॉर बीइंग ए लाइफ टाइम गोल्ड मेंबर। थैंक यू। नीलेश हीरालाल जी, प्लीज बताइए। नमस्कार सर, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात भावनगर से। और मैं टैक्स एडवोकेट हूँ। और मेरे फादर और मेरे जो बड़े भाई हैं उनके साथ यहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा। और आज का जो सेशन है वो इतना जो भी इंटरएक्टिव रहा, लाइव रहा, और जो ड्यूअल लैंग्वेज है कि इंग्लिश और हिंदी, वो क्या है, कभी कभार कोई स्पीकर होता है कि पूरा थोरली इंग्लिश में ही बोलते हैं तो वो पूरा सा सब वो हो जाता है कि भाई बाउंस हो जाता है।
तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपने ली है, तो वो भी अच्छी बात है। और आपने इंटरएक्टिव रखा है, तो वो भी अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। थैंक यू। जुड़े रहिए नीलेश जी। और प्लीज, और कौन है? राहुल, राजीव दास, रेडमी नोट, संतोष चौधरी, संतोष पाटिल जी, श्याम सुंदर, प्लीज अनम्यूट कीजिए, बात करें हम लोग। मृत्युंजय, प्लीज वीडियो में आइए, वीडियो में आइए। आवाज ऑडिबल नहीं है। वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। वीडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं। आवाज रघुनाथ गुड़के सर। अच्छा, कहाँ से? कर्नाटका से। कर्नाटका से। ओके। संतोष चौधरी जी। हाँ जी, हाँ, चार्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर। ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है सर, if you permit, can I leave? Yes, प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम, जुड़े रहिए जी। अब बाकी लोगों से भी बात कर लेता हूँ, एक बार हो पाती है तो। चलो, संतोष पाटिल जी, वीडियो ऑन कीजिए। यस। वेलकम संतोष जी, वेलकम। यस सर, मैं एक्चुअली गोवा से हूँ, टैक्स प्रैक्टिशनर 25 ईयर्स से। लेकिन जब से मैं के सर से जुड़ा हूँ, तब से पहली बात तो मैं सुबह 5 बजे उठने का मेरी आदत हो गई है। और जो भी मेरा फ्रेशनेस आता है, पूरा दिन जो मैं फ्रेश रहता हूँ, तो उसके लिए तो मैं आपके लिए थैंक यू बोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, आपके सेशन की वजह से मुझे ऑडिट केस में बहुत ही फायदा हुआ है। और जैसे कि मैंने कैपिटल का आपका जो एक्सेल शीट है, उसका तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूजफुल था, जो कि डिपार्टमेंटल लोग भी नहीं कर सके कि वो आपके एक्सेल शीट ने कर। और किस तरह से पढ़ना है, ये तो हमने आपसे जुड़ने के बाद ही हमको मालूम पड़े किस तरह से सेक्शन एक्ट रूल कैसे दिखता है, और किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है, कितनी बार उसको पढ़ना है वो समझने के लिए। ये सब हम लोगों ने सबसे सीखा सर। सबसे आपसे जुड़ा हूं तब से मैं क्या बोलूं, मैं आई एम जस्ट इंक्रीज माई नॉलेज, और अच्छा लग रहा है। तो इवन आजकल मैं काउंटर भी करता हूँ ऑफिसर से। तो थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सर। और हमेशा हम लोग जीएसटी की लाइव क्लासेस लेते हैं, तो हम लोग मॉर्निंग में 6:30 से स्टार्ट करते हैं, 6:30 to 8:30। तो जिनको उठने की आदत है वो उठ जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, और उसमें इसी तरह से इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं। और जैसे संतोष जी है, वैसे कई लोग जुड़े थे हमारे साथ, और वो लाइव क्लासेस अब रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो आप अच्छा जीएसटी अगर सीखना चाहते हैं, गहराई वाला इंडेप्थ जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो हम लोग तो बहुत ही हम्बली हाथ जोड़ के कहते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है। और कोई अपने आप को कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो कर लीजिए। महेश जी, चलिए महेश जी। Good evening, sir. Good evening. Did you attend? So this is my first session, sir. Okay. So I'm from Mysore. Okay, Mysore. I'm a tax advocate. But for the last 2 years, I'm not practicing. Achha. But now I'm thinking to restart my practice after hearing you. Thank you. Thank you. That is very good. What changed your mind? Maheshji, what changed your mind? Your talk, sir. Your session was excellent. Okay. And you make things easy, look easy.
So any draconian law will be made easy by you. Thank you so much. Thank you. So And I'm to start the practice- really thinking of restarting my practice. To start the practice, we have Balaraj from Mysore also. You can take his help. He's our student. Oh, I see, sir. We are connected all over India. You name the Yes, sir. Good evening, sir. Bala, sir. And they are actually, they are into GST litigation, not GST compliance. You start with GST compliance, then move to GST litigation. But here we are practitioners. Like I am only in GST litigation. I see, sir. So you can get the help from them also. Oh, sure, sir. Right. Sure. Sir, can you kindly send me your link, sir? I want to buy your books. I will send you the link. Oh, sure, sir. But I will request you to buy both the books, but not today. Today by evening we'll correct that there is some problem because the book was 800 plus 800, 1600. If you buy both the books, then it comes to 1400, 200 rupees discount. That is not visible. I need to correct that. Sure, sir. Sure, sir. Okay. And I will send you the look tax by ak.com. Sir. On WhatsApp is also there. Right, sir. Thank you, guys. Thank you. Anyone, sir. Anyone else? See you tomorrow, sir. Yes, please. और कोई? बलराज जी. Good evening, sir. Good evening, Balraj ji. Sir. Good evening, sir. Actually, I am traveling from Bangalore to Mysore, sir. On the way to Mysore. Okay. Today I have a case in investigation, so I went there. On the way to journey, I am talking, sir. So I was not able to communicate properly. Okay. कोई बात. बाकी और कौन है? राजेश जी, राजेश मचराला जी, अब्दुल बसीत खान, अतुल गुप्ता जी, बीके त्यागी जी, सी अक्षय कोचर से मेरी बात हुई? Yes, sir. I am C. Akshay Kochar. अच्छा जी, बोलिए. I am from Mahasamund, Raipur, Chhattisgarh. I recently qualified and I recently quitted my job from the bank to go into GST field, and it was a delightful experience to had a lecture with you. I purely don't study GST after my examination, but recalling something, it was very great to have an interactive session with you. Looking forward for more such sessions ahead. Thank you, Akshay. Okay, sir. और सीए प्रकाश, डीबी एच बृंदा, हेमंत देसाई, के वनीता, मेरी आपसे पहले बात हुई थी लगता है, के वनीता से. मनीष, मंजुनाथ जी, एमएम नारंग, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो एक बार बात कर लीजिए. स्वामीनाथन, if you can put on your video and we can talk. Redmi Note 10s, प्लीज बताइए. अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. Redmi Note. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट. हेलो. हाँ, बोलिए. नमस्ते सर. नमस्ते. अग्रवाल सर, नमस्ते. रविशंकर बात कर रहा हूँ बेंगलोर से. राजेंद्र. रविशंकर, बेंगलोर से. बेंगलुरु, कर्नाटका. अच्छा, बोलिए. पहले बार आपका सेशन से ज्वाइन होके मेरे लिंक मेरे दोस्त भेजा था, इसकी वजह से आपसे मुलाकात हो गई. अब अपने दोस्त को थैंक यू जरूर से बोल दीजिएगा. अच्छा सर, अभी बोल देता हूँ. आपके अच्छा सेशन था, पहली बार आपसे मुलाकात हुआ. आप लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो रहा है अभी. आगे भी जानकारी होना चाहता हूँ ऐसे सेशन में. तो रोज मिला है तो अच्छा रहेगा डिस्कशन करने के लिए, थोड़ा आपसे मिल के बातचीत करने के लिए भी अच्छा रहेगा.
अपडेट भी हम लोग भी जानकारी रहेगा, क्या नोटिस आता है, किसकी कैसे रिप्लाई करना चाहते हैं हम लोग, ऐसा इंटरेक्शन तो बहुत अच्छा रहेगा सर आगे से। थैंक यू, चलिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर नमस्कार सर, दिस इज राजेश। राजेश जी, आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा वो अभी मैं ट्राई कर रहा है सर, अनेबल टू। बताइए ऐसे ऑडियो। सर आई एम द टैक्स एडवोकेट सर, लास्ट 2 years बैक आई एम गॉट एडवोकेट। अच्छा, कहाँ पर? ये तेलंगाना सर, तेलंगाना, हैदराबाद। ओके ओके ओके, since last years I am in GST field, just practicing the returns and accounts, etc. I am the first station, आपका फर्स्ट स्टेशन है ये हमारा। अच्छा है सर, आपका सेशन अच्छा है, हमारे को अच्छा लगा। So I am follows आपका वेबसाइट taxkk.com, taxbykk.com। हाँ, taxbykk.com। Okay sir, and I will also, you just mentioned tomorrow you will buy the books for 1400 rupees, 2 books। Sure tomorrow onwards, huh? हाँ sure। Okay sir, sure sir, I Okay, will order the books। ठीक है राजेश जी, थैंक यू सो मच। Okay sir, thank you। Okay, anyone else? Anyone else? MM नारायण, प्लस ऑडिटर साहब भी है, ऑडिटर साहब तो आ ही नहीं रहे। सुरेश YR, अतुल गुप्ता, अंकिता खेतान। चलिए फिर कल इसी लिंक में मिलेंगे हम लोग आपके साथ। थैंक यू सर। शाम को। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, यू ऑल केम। थैंक यू सर। मुझे थैंक यू सर। आप लोग सीनियर का जूनियर का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला और मैं भी आप लोग से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।